कनाडा भारत के रिश्तों में जिस तरह के तनाव आ रहे हैं, उसके भी अलग जिस तरह से कनाडा के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खबरें जो आ रही हैं, वो चिंता वाली बात है। तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं दुनिया भर के देश इस स्टेटमेंट को क्लियरली ऐसे देखेंगे कि भारत क्लियरली अपना विचार रख रहा है जो हमें दिख रहा है। When the Prime Minister of India reacts to something like this in the kind of language he has used, so when he says that deliberately targeted, it's not just these Khalistani terrorists and toilet cleaners that he's pointing the finger to. He's also pointing a finger to the Canadian state authorities who have allowed this targeting to happen, despite the fact that there was an apprehension of breach of peace. Prime Minister मोदी ने जो कहा है बहुत एप्ट कहा है। पहली बात, मोदी जी ज्यादा टिप्पणी नहीं देते। तो इस समय कनाडा भारत के रिश्तों में जिस तरह के तनाव आ रहे हैं, उसके भी अलग जिस तरह से कनाडा के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खबरें जो आ रही हैं, वो चिंता वाली बात है। तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर तो डिप्लोमेटिक शब्दों में कह रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं, चिंता का विषय है। पर एक आम ऑब्जर्वर हमारे जैसे तो ये कह सकता है कि जो कनाडा में हो रहा है, ये दिख रहा है कि कनाडा की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल इंटेलिजेंस, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं घपला रहे हैं, वो इफेक्टिव नहीं है। अगर कैनेडियन सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहती अपने देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, कैनेडियन सरकार अगर वो नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स कैनेडियन सरकार इनइफेक्टिव प्रूव हो रही है, या फिर कैनेडियन सरकार की कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो अनदेखा कर रही हैं जो उनकी सरकार चाहती है, क्योंकि हर सरकार तो शांति चाहती है। तो कनाडा के अंदर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, दिखता है उनकी सरकार, उनकी लॉ एंड ऑर्डर, उनके सिक्योरिटी अपैरेटस में। पीएम मोदी का ये पहला रिएक्शन है कनाडा के ऊपर, इन हरकतों के बाद कह सकते हैं कनाडा का। तो कनाडा से और भारत से जुड़े हुए देश पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट को कैसे देखेगा? देखिए, दुनिया भर के देश इस स्टेटमेंट को क्लियरली ऐसे देखेंगे कि भारत क्लियरली अपना विचार रख रहा है जो हमें दिख रहा है, क्योंकि कनाडा और भारत का ये जो तनाव है, ये पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। In the last 1 year, since Canada has started making these scurrilous allegations without giving any evidence, the Prime Minister has kept a very studied silence. He hasn't responded. He has considered it beneath his dignity to respond to what the Canadians have been saying. So, yes, the External Affairs Minister, the Ministry, other people have commented on it, but the Prime Minister has simply avoided it. But I think now what happened yesterday, it's the tipping point has been reached in some ways. And I think the Prime Minister has reacted to it. And when the Prime Minister of India reacts to something like this in the kind of language he has used, so when he says that deliberately targeted, it's not just these Khalistani terrorists and toilet cleaners that he's pointing the finger to. I think he's also pointing a finger to the Canadian state authorities who have allowed this targeting to happen, despite the fact that there was an apprehension of breach of peace. They have been following what some Canadian observers themselves have pointed out, a two-tier policing. So when the Khalistanis, defile the Indian flag, the Canadians are pretty okay with it. It's like freedom of speech. When the same thing is done by the Hindu community in Canada to Khalistani flags, Canadian police steps in. Canadian police officers, including some Khalistanis who are part of that police force, have assaulted people, and we saw Canadian fascism of the police. This is the kind, it brings back scenes from Germany of the 1930s when the Nazis used to, carry out this kind of action. And this is rule of law Canada, where you've seen the kind of actions that the Canadian police have taken one-sided. Incidentally, they didn't go to the other side. The guys who have been making provocative speeches, putting up hate posters, all of that, it's been ignored by the Canadian authorities. So it's deliberate targeting. And when the Prime Minister takes a very dim view of it and then takes a dig
at this constant rattle from Canada that we are a rule of law country, then let's see where the rule of law is. So I think he has made a very strong statement. Unfortunately, I don't think the Canadians will heed it. They will not smell the coffee. Because I think until and unless India was now going to start using some other measures to demonstrate India's resolve, which the Prime Minister mentions, and we take certain measures against the Canadians, I don't think this matter will